somehow due to some reason. Now, learners, today we'll start the sixth block, right? Sixth block. Tomorrow is Thursday, we'll do seventh block, and Friday will be eighth block. And then I'll see you off after that. But learners, if you have any problem, you can ask me regarding my papers. Now, now learners, we are going to see what is this canon. Okay, CANON. कैनन को यूजुअली हम लोग जनरल टर्म्स में बोलते हैं, वो जो तोप होता है ना, तोप तोप का गोला लगा के तोप उड़ाते थे पुराने टाइम में मुगल्स लोग. So that is actually literal meaning of canon. But here in English literature we means some generalized set of rules. Okay, that is the canons. The generalized that, with time we have made some theories, we have some rules of writing and disseminating, means publishing and showing our ideas in our writing, proving ourselves as writers. So with due time we have set some rules, so those sets of rules and theories are known as canons. Okay. So uh, we are going to interpret this canon today, and uh, as our topic is only Indian writing in English, so we will be just moving around, focusing around the canons set in the Indian writing in English. Okay, and interestingly, not only we people, we Indians have set our own rules, but people from outside also, they have pointed out to us certain canons in our Indian writing in English as well. Okay, so we are going to interpret what is this canon, and what is we will discuss the present state of English literature, present state, because from the day we started, we had started from 200 years back. Okay, from 19th century. So 200 years back, things we had discussed, old literatures we have discussed. Now we are coming to the present times, and we'll see what is the academic standard of Indian writing in English, that we will discuss elaborately. Though yesterday and day before yesterday we have discussed a bit about that, how time has changed, and with changing times we Indians have become one of the eminent writers in Indian writing in English, and we have become so nice writers that even we have fame outside India. Okay, outside India, or around the globe we have become famous. All right, so um, in today's time, our present form of literature. Now when I talk about form of literature, when I'm talking about literature, then I'm specifying Indian literature. Okay, Indian writing in English, that is what it is for us. So the present form it has contained. Okay, and how as we have started that, now we are trying to find certain the social cultural significances in through literature. So we will see that how with this development of forms, we have studied the whole range of social and cultural significances that we will see. Okay, and how we are relaying this culture, this social conditions to the world, in what way, that also we will discuss. Uh, So, people here who are part of the literate minority class, means the literate class. Literate class, through literate class, I mean that those who can at least understand literature, read and understand literature. Okay, they are somewhat very much perfect in understanding literature, though they do not belong to this specified English literature field. But even though when they are in other lines also, other fields also, and when they are quite literate, quite well educated, they can understand perfectly well the usage of skills, language skills in our Indian writing in English. They can understand, and these
mass of people, they form the literate mass, who read, who understand, who absorb these literatures. Okay. Now, uh, but when there is a student who is majoring, when he is the honor student in this language, English language, uh, he can interpret this literature with the help of university. By this, I mean that although readers around the world who are not from the specific English honors field, English literature field, they can read. Okay. And they're quite good, quite properly skilled in English language, and they can read, they can understand. That is a different thing. But when we are taking up students as honors students, as majors in English literature, okay, then what they do, they learn the skills of interpreting these literatures. Okay, so the same thing we are going to do now. Now we are teaching you how to interpret Indian English literature, and how we are going to see the social setup of our country through Indian writing in English. That we will see that how we can see the society through these forms and structures of literature. In literature, I mean Indian writing in English. Okay, so uh, I won't go on repeating this same thing that we read English and we consider ourselves superior. These things I have done too much. Now, also remember, learners, that we are the third world countries. Okay, the first world country is England and US, and we are known as the third world countries, and we will see that how we as third world countries, how we are aware of the nuances of this 19th century colonist policies. Okay, how they have set up policies, we know those things. Okay, I mean only specific to literature, they have set up those imperial policies, they have set up certain rules, certain forms. We are aware of that. Okay, so in India today, we have English as a second language, and also you can call it the official language of India. And we are not trying to suggest the impossibility of introduction of new language here in our country. What we are trying to say is that as it is a third world country, we know those British policies, British rules of interpreting and analyze literature, to some extent we are using them also, their method, their use of interpretation of literature. But as we were discussing yesterday, that we had formed our own Indianized English, and in that Indianized English we are reading, we are interpreting. So when we are interpreting those Indianized English literature, simultaneously we are trying to look into the society, into the culture of India. Okay, so this kind of interpretation is non-Western. Okay, non-Western. It is typically Indian interpretation. Okay, or you can say the Asian interpretation of our Indian literature. Now, if we say that we are going to interpret literature, we are going to take some of the forms and style of imperialistic policies and imply in our literature, then in that context, what do we mean by canon? And how those canons are constructed, that we are going to do. So actually canon is a term. Okay, it is a term used to denote a body of texts. Okay, and the understanding of those texts, which constitute the literary range of a group studying English literature. The term canon is a body of text. It is text, okay, and the understanding of this text constitutes the literary range of a group studying in English literature. So, canon is actually those texts that indicate forms, that indicate some theories, okay, some do's and don'ts in those theories that we read as students of English literature. Now, if you feel a little bit confused and off with this statement, then we have lots more discussions that we'll be doing today, because today we'll be exclusively dealing with these canons. So, while we are dealing with this, you can understand, for now, try to know that this is the
Text. Okay, try to understand only this much now, that it is a type of text, it is a body of text. Okay, and it has got various literary types of writing that we people as English literature, as students of English literature are studying now. And when we are studying as students of English literature, we are trying to see through some rules, okay, some methods of not only writing but also reading these literatures. So those texts are part of our category, that we are reading specifically that we read. They are called canonical texts. Okay, and therefore they constitute the whole body of literature. Okay, so on the other hand, you see those texts outside the canon can be referred as popular fiction, or they are also known as literary genre. I think now it gets a little bit clear with you. Canon means, suppose when you are reading those same mainstream literature, like when you start, you read Chaucer, you read Milton, you read Spencer, you read Shakespeare. This is how you go on reading. When we come to Indian writing in English, then what is our mainstream writing? Our mainstream writing that we read as students of English literature is R.K. Narayan's stories, R.K. Narayan's novel guide. Okay, when we are reading Mulk Raj Anand, when we are reading Prem Chand, when we are reading Ghosh, okay, when we are reading Gitanjali Shri, these are all general basic canonical writing. Now, anything apart from this canonical writing is known as alternative literature or popular literature. Means, suppose when we are reading Chetan Bhagat, he's writing 5 point someone. When we are reading Chetan Bhagat, it is a kind of 5 point someone is considered as a campus novel. Means novel about only youngsters, only adolescent people. It deals with adolescent people, young adults. So that is actually alternative. Okay, that is specifically for meant for college readers. Though we read it, no doubt, but it is specifically for them, for college going people, like we discussed yesterday. That when we are reading during our youth, it is just a casual reading. So more or less, this is meant for those casual readers. They are popular literature. If you're reading detective novels, like Agatha Christie, all these are also alternative novels because it is detective. Okay, so canonical is the mainstream things, which usually talks about some universality applicable for everyone. Okay, whereas alternative things are meant for specific group. So sometimes tribal literature is also considered as alternative literature. So the opposite of canonical literature is alternative literature. Could you understand, or should I repeat? Ma'am, please repeat once again. Okay. Now see, canonical literature means text. Okay, the text that people of specifically English literature major students read. Okay, now generally anybody can read. Okay, literature is for everybody. Novel reading is for everybody. But when we are reading to find out certain, as I told you from yesterday, certain social aspects, when you are reading to find certain cultural aspects of that time and of that place of that person who is writing. Okay, so society, culture, politics, these general things when we are trying to explore in a book, that is canonical. In other words, you can call them mainstream literature. Okay, that talks about the general things. All right, like society, culture, politics, these are the general things. But when you are reading Chetan Bhagat, okay. He is talking about college life, and there is a boyfriend and there is a girlfriend in college, in a college, and somehow they split apart. The girl falls ill, she suffers from cancer, and she doesn't let her boyfriend know about it. And without the knowledge of the boyfriend, the girlfriend dies. Okay, like half girlfriend I was reading years back, Chetan Bhagat. So that is actually alternate literature. Why alternate? It is mainly for young people. Okay, for young adults to read, and they could connect themselves uh, uh,
with that novel. They can, it is a good type of pastime for them. Or suppose Agatha Christie, it's a detective thing, detective book. Agatha Christie says there's a murder happened somewhere, and Christie tries to find out who's the murderer. So that is also alternative text because it is only finding some accused. Okay, but it doesn't talk broadly about any society, any culture, any politics. No, it is very specific. It is not canonical. So in that sense, you can say that canonical texts talk about the vast, broader range of things. Okay, broader aspects it is trying to depict. That is a mainstream literature. Okay, the idea is broad when it deeply and elaborately talking about psychology, the society, the culture, all these major things, then that is canonical. All right. But when the idea is narrow, the detective is searching and searching for the accused. So that becomes narrow and that becomes alternative text. Could you understand now? Yes, ma'am. Okay, good. Now, should I proceed? Yeah, sure. Okay, good. So this broad area of study is the canonical text. All right. So, mm and the others are they're called popular fiction. Sometimes they are called alternative literature as well. Okay. So now, if you see, we are the third world writers. So initially there was a debate: are we canonical or are we alternative? Because canonical people used to write from ages back in English, ages back. Okay, from 15th century there was a proper form and shape in English writing, and then it started mainly from Chaucer. Okay, so there's a question that then who are third world writers? They are canonical or they are alternative. They are not canonical. So that is again a matter of debate for us. So works of third world writers, those who are writing in English, they are to some extent not considered as the canonical writers. They are not part of the canon. Okay, and for them a separate title has been framed. All right. So when we write, we cannot say we are canonical writers. We are separate. When it is globally read, when our text is globally read, then it is not a canonical text. Our writings are not canonical. Okay, a separate name has been framed for us, for we third world people and our writing. Okay, so we should be as students of English honors, we should be very much familiar with the debate on the identity formation. Okay, of the writers of the third world countries. Identity formation means how our identity changed. Okay, during pre-colonial time, during colonial time, and then post-colonial time, how we evolved, how we changed, how our natures changed, how our societies changed. Okay, how our culture also got changed due to all these imbalances. So that is why for us we have got a different kind of stories. Okay, and mainly the stories evolve around the identity formation of our writers. How now they are writing as people from a newly independent countries. That is important. Okay, so our location is also very important to determine whether we are canonical or non-canonical. So now should be we are grouped. Okay, so we are grouped as post-colonial literatures, or we are also known as Commonwealth literature. So our literature is not known as canonical literature. Our literatures are known as post-colonial literature or Commonwealth literature. Okay, so in all these writing and literature, canon actually occupies a place of its own. And students, those who are specializing in English, they are subject to test this kind of canonicities of text. Okay, so you will be tested
about tested to define to identify the canonicity of this text. That is sometimes your task to see how can you define, how can you objectify canonical text from the non-canonical text. Okay, this is usually what English honors students do, those who major in English. So when we are studying the formation of the canon in our context, we will now first look at the way it was understood in the context of England, because from there the canons were set. We did not set the canons. Okay, we wrote back. Okay, but these canons were set by them. So because our version of canon uh, is what we have learned from first world. So when we teach a student, it is a kind of offshoot that we are just conveying to them. Okay, means our country or our third world did not form the definition of canons. First world defined it for us. Okay, and we are just teaching it to our students that what is canon according to them, according to the first world. So the canonical text of English literature is based on Macaulay. Number one, please remember. Ma'am, who is the first world, second world, third world? First world is generally we say the US and Europe, and I think Canada also. And the third world is ours. Post colonial countries are ours. Okay, like India, Africa, we are all third world people. All right. So usually the canonical, remember this one, canonical texts of English literature, they are based on the ideas of Macaulay, Matthew Arnold, Newbolt. Okay, they had their reports. Okay, and they, made Excuse the. me, madam. Please repeat. I will, I will. These three people. Okay, Macaulay. Mac- Okay, canonical texts in English literature, they're based on the ideas of Macaulay, Arnold, okay, and the Newbolt report. Newbolt, Newbolt, Newbolt report. Okay, Newbolt, all these reports have been made, Macaulay's, Arnold's, and Newbolt's. And the influence of the eminent figures like F.R. Lewis and T.S. Eliot, they formed these theories. Okay, F.R. Lewis, F.R. Leavis, Lewis, and T.S. Eliot. Sangamita, just mute your phone. Yes, 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 ma'am. Okay, so uh, Macaulay, Arnold, and Newbolt's report had a lot of influence in the making of this canon. Apart from them, F.R. Lewis and T.S. Eliot had formed some literary theories defining and determining the canons. That what you should consider as canon and what kind of literature you should consider as non canonical. That has been specified by these two writers. Okay. So they have actually determined this canon and non-canon with respect to the social setup. Now, firstly, here how canons have been determined. Firstly, the economy here of English society it changed uh, the agrarian society to a industrial society. Okay, I'm talking about England, and all these things, evolved the society, and as a result the literature that was produced with respect to society that got influenced by the society. But how society changed? Mainly from the economy of England. Okay, so English society was basically agrarian previously. Agrarian means agriculture. They also, just like our country, they also depended mainly on the agricultural outputs, and mainly they had these pastoral lands. Okay, pastures means big green lands were there, and they used to rear sheep there, sheep, and they
used to take out the wool of the sheep and sell it in the market, and they gained huge profits from these wools. So the profits became so high by collecting these wools that agriculture started going down. So then we had, if you read that British literature, you must have been taught that there was a peasant revolt then. Peasant means farmer. Farmer revolted that all the lands have been changing to pastures, because pasture and sheep rearing is an as a easy business. Okay, whereas agriculture is so hectic, so difficult, so painstaking. So peasants said that if you convert so much of land into pasture land, then how, where will the agriculture output go? So they protested. So mainly these lands were agricultural, or you can say pastoral lands. But you can also see that England was one of those very first countries who had the earliest industrial civilization. Okay, so they were mainly changed from pastoral, from agrarian land to industrial land. So drastically, the society also changed. Likewise, mainly they were farmers. Now they become industrialists, industry owners, or industry workers. So money came pouring down to England. Okay, and they then at that time, during Victorian time particularly, also this you must have read that now the society got divided into two parts. As I told you, one section owned these industries. Okay, another section, they were just workers. So those who owned were high class people. Those who were workers in those factory, in those industries, they were low class people. So there was a gap in their society, and this gap on the society made creative writers to write a lot about the prevailing condition of the society. Okay, so these formed, according to them, the canonical texts, because it is England, because it is the center of modern civilization and industrialization, because the society formed and shaped there. Okay, so when those literatures were written, they were mainly considered as canonical literature because they broadly spoke about the society and culture of the place. Okay, so this aristocracy, they formed one different class. Okay, and they were known as the aristocrat society. So this is what we mainly see in the 19th century England. So at that time, education and literature also was was the main possession of the upper class people of England. Okay, so they got more educated and they got very much refined in literature also. So everything rested in their hands. Obviously, when if power is in their hand, so they will propagate their country more. This is quite natural. So when they had it in their hands, what education and literature, they were the one to frame those theories. Try to understand this kind of linkages. If you're not able to understand, stop me and ask me to repeat. This is how, because this is very important, this is how the canons formed. Okay, so as I told you, I'm repeating that there was a class divide in in England. ओके, यहाँ पर अब तक तो कितना है, 19th सेंचुरी में तो इंडिया स्टिल बहुत गरीब था और ज्यादा गरीब हो भी रही थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल. और एजुकेशन तो था हमारा, बट वी हैड डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन. हम लोग बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल एजुकेशन में बिलीव करते थे, नॉट इन ऑल दीज सो मच ऑफ मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन में हम लोग का नहीं था. तो ये जो इंग्लिश के जो अपर क्लास पीपल है, यू हैव टू वेरी माइन्यूटली अंडरस्टैंड दिस. ये जो अपर क्लास पीपल है इंग्लैंड के, उनके हाथ में पावर है. अगर उनके हाथ में पावर है तो उनके हाथ में एजुकेशन का पॉलिसी भी है. ठीक है, उनके हाथ में रिच लिटरेचर भी है, बिकॉज वो लोग साथ में इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग पावरफुल इज इन देयर हैंड्स. सो दैट इज वाई इतने पावरफुल थे, तो उनको प्रिविलेज मिला दैट इट विल बी देम हु विल बी डिसाइडिंग द कैनन्स. ओके, तो स्लोली स्लोली क्या हुआ, जब इंग्लैंड का मिडिल क्लास
उनको भी जो राइट टू एजुकेशन आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से, लेट 19th सेंचुरी में, तब और भी लोग पढ़ने लगे। ब्रिटेन के मिडिल क्लास को भी पावर आ गया, पावर ऑफ एजुकेशन। तब से उनका एजुकेशन ये हो गया, कंपलसरी फॉर ऑल हो गया। तो वो लोग ज़्यादा पढ़ने लगे, तो मिडिल क्लास भी नॉलेजेबल हो गया। सो एट दिस टाइम वी हैड टू कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू। ओके, जो पावरफुल ग्रुप थे वो चाहते थे डोमिनेट करने एजुकेशन को, ठीक है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास भी अभी जो उठ रहा था, जो मिडिल क्लास भी अभी पढ़ाई कर रहा था, ओके, वो चाहता था कि नहीं, लिटरेरीनेस जो है, एजुकेशन ज्यादा पास ऑन होना चाहिए अमंग डिफरेंट पीपल। ओके, द मिडिल क्लास पीपल of England, those who were rising in their status, they said that no, पावर ऐसा पकड़ के रखने से गलत है, स्पेशली व्हेन इट इज एजुकेशन। मिडिल क्लास पीपल वांटेड टू स्प्रेड एजुकेशन एज मच एज पॉसिबल। एंड रिमेम्बर, कोई भी सोशल सेवा के लिए नहीं कर रहा था। बोथ दिस ग्रुप्स दे हैड द इंटरेस्ट। ओके, जो हाई क्लास एरिस्टोक्रेसी था वो पावर रखना चाहता था, ठीक है, और जो मिडिल क्लास था वो अपने हाथ में पावर रखना चाहता था। सो मिडिल क्लास सेक्शन वांटेड टू मेक एजुकेशन फ्लेक्सिबल, ओके, बट दे हैड देयर ओन लिमिटेशन। ओके, वो लोग आपस में भी दे हैड अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स। वो लोग एजुकेशन को फ्लेक्सिबल चाहते थे, वो टाइम के इंग्लिश मिडिल क्लास पीपल, जब उनके हाथ में एजुकेशन का पावर आया, लेकिन वो दे हैड देयर ओन लिमिटेशंस। दे वांटेड एजुकेशन फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स ओनली, एंड दे डिड नॉट अलाउ टू फिल्टर इट डाउन टू द मासेस। और ज्यादा लोगों को एनकरेज नहीं किया जाता था एजुकेशन के लिए। ओके, दे सेड दैट वी शुड स्प्रेड इट टू ऑल, लेकिन फैक्ट ये है, ट्रूथ ये है कि ज़्यादा मास को एनकरेज नहीं किया जाता था एजुकेशन के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू होल्ड पावर। दे अंडरस्टूड दैट एजुकेशन इज पावर। ओके, तो सबको एजुकेशन का वो लोग पावर देना नहीं चाहते थे। सो इन दिस केस कैनन वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज रीस्ट्रक्चर्ड टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ ओनली दीज टू ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन कल्चर का, प्रॉब्लम आ गया कल्चर का, क्योंकि हाई क्लास कल्चर अलग है, ये मिडिल क्लास कल्चर अलग है। फिर कैनन को लेके कल्चर क्रैश हुआ। अंडरस्टैंड? हैव यू अंडरस्टूड और यू वांट मी टू रिपीट? No, टेल ma'am, मी। understood. Understood? Because you must have done this in your British literature. Yes, ma'am. uh, हाँ, Yes, विक्टोरियन ma'am. एज में कैसे क्लास डिवाइड हुआ था, और ये क्लास डिवाइड में एजुकेशन का रोल कहाँ है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। यू हैव टू मार्क दिस। ओके, तो क्लास डिवाइड हुआ तो पहले तो अपर क्लास अपने हाथ में एजुकेशन का पावर रखे, फिर बाद में जब एजुकेशन कंपलसरी हो गया तो मिडिल क्लास वो पावर को होल्ड ऑन करके रखना चाहते थे। ओके, और मेनली ये दो ही कैनन्स को आइडेंटिफाई किए, स्ट्रक्चरलाइज मिडिल क्लास और अपर क्लास ही किए मेनली। ओके, तो इसमें देखो मैथ्यू आर्नल्ड और एफ आर लिविस का क्या रोल है इन द क्रिएशन ऑफ कैनन। और वो लोग तो कैनन क्रिएट किए, बट वी हैड जस्ट फॉलोइंग इट। ओके, सो इंग्लिश लिटरेचर एट दैट टाइम बिकेम सिनोनिमस विद कल्चर। ओके, क्योंकि दो अलग अलग कल्चर हो गया, एक तो एरिस्टोक्रेसी कल्चर, हाई क्लास कल्चर इंग्लैंड का, जो इंडस्ट्रीज के मालिक है, हाँ, जो पार्लियामेंट के भी मेंबर्स होते थे वो टाइम में बहुत सारे अपर क्लास पीपल। ओके, और एक क्लास था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास रोज इन द स्टेचर, मिडिल क्लास पीपल, मेनली बिकॉज एजुकेशन जब कंपलसरी हुआ, दे टुक द एडवांटेज मोर, एंड मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो स्टार्टेड राइजिंग इन दैट लैडर ऑफ इकोनॉमी। ओके, लेकिन कल्चर डिफरेंसेस था, तो लिटरेचर ज्यादा करके ये जो डिफरेंसेस कल्चर को लेके ही रिप्रेजेंट किया जाता था। ओके, सो एट दिस टाइम मैथ्यू आर्नल्ड का जो अप्रोच था, उनका जो थ्योरी था, उसको ज्यादा करके यूज किया गया था।
So according to him, when there is the existence of God, okay, and when you doubt about the existence of God, उस टाइम में ये लोग इतने materialistic हो गए थे। एक टाइम में तो बहुत रिलीजियस थे इंग्लिश पीपल, क्योंकि सब चीज कंट्रोल होता था चर्च से, और चर्च डिक्टेटेड, लिटरली डिक्टेटेड पावर टू द पीपल। लेकिन अब तो और चर्च हेड नहीं है, अ, अभी हेड हो गया क्वीन या किंग जो भी था। ओके, सो नाउ व्हाट हैपन, जब तो अभी ना इन लोग के अंदर में तो वो रिलीजियस फीलिंग थोड़ा कम हो गया, नेशनलिज्म हाई हो गया, रैशनल थिंकिंग हाई हो गया, लेकिन रिलीजियस क्या बोलते हैं उसको, बिलीफ थोड़ा कम हो गया ये लोगों में। सो मैथ्यू आर्नल्ड बोलते हैं कि अगर तुम ज्यादा डाउट करते हो ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ओके, देन you should come to literature to get the answers. Okay, so it says that when existence of God is increasingly subject to doubt for you, then literature will provide you answers. So he is calling people, Matthew Arnold is calling people, come and get your answers from literature. डाउट है अगर भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में, ट्राई टू फाइंड समथिंग फ्रॉम लिटरेचर। ओके, क्योंकि लिटरेचर में सिर्फ स्टोरी नहीं होता था, देयर वाज इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन सोशल चेंजेस ऑफ द टाइम। ओके, क्योंकि आर्नल्ड उस टाइम में नोट किए थे कि डार्विन का जो थ्योरी था एवोल्यूशन का, हाँ, वो क्या क्या था, उस टाइम में डार्विन ने नया नया थ्योरी निकाला था इवोल्यूशन का, कि हम कैसे इवॉल्व हुए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी निकाला उन्होंने। उन्होंने कहा हम कैसे मंकी थे और आस्ते आस्ते मंकी से इवॉल्व हो के इस तरह से ह्यूमन बीइंग बने। सो दिस इज डार्विन्स थ्योरी। जब डार्विन का थ्योरी निकला तो लोगों में डाउट आ गया। ओके, तो ये साइंटिफिक बिलीफ को लेके भी लोग क्लास सॉरी सोसाइटी डिवीजन हो गया। कुछ लोग क्रिश्चियन क्रिश्चियन फेथ में क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि क्रिश्चियन फेथ में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मंकी से इंसान बना, ऐसे नहीं है, दिस थिंग्स आर नॉट देयर। ओके, इन क्रिश्चियनिटी द फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ वाज एडम, द फर्स्ट वुमन ऑन अर्थ वाज ईव। ठीक है, वो लोग रिप्रोड्यूस कर करके हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व अकॉर्डिंग टू बाइबल। But according to Darwin's theory, he says that no, we are always trying to, adapt ourselves to the conditions on Earth. So we evolve from time to time in order to have a better adaptation. So adaptation process में हम लोग आस्ते 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 monkey से we become human beings. So ऐसा नया theory आया तो people started having their doubts, okay, on the Christian birth. दे स्टार्टेड हैविंग डाउट्स ऑन द बाइबल, जो बोलता है कि सफरिंग और डेथ इनएविटेबल है, और आफ्टर लाइफ है, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद एक लाइफ है। इट बिलीव्स इन ऑल दोज थिंग्स। सो दोज हु वर क्रिश्चियंस दे वर कंफ्यूज्ड, ये किसका बात माने, कि हम बंदर थे, डार्विन का थ्योरी जो बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल है, वेर इज बाइबल का थ्योरी जो बहुत रिलीजियस है, सेंटिमेंटल है। ओके, सो दे वर कंफ्यूज। So science here emerged as a body of knowledge. They recognize that, okay, and they could find that it could provide some logical answers to the questions that people have. बहुत सार बहुत लॉजिकल है डार्विन का थ्योरी। सो एज अ रिजल्ट नाउ फेथ बिकेम एम्प्टी। ओके, लोग फेथ को, क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा क्या कर दिए, पीछे छोड़ दिए, दे गॉट नेग्लेक्टेड द रिलीजन। So these thinkers like Arnold, they felt that literature gives some direction. Science को हटाओ, religion को भी हटाओ. Take some help from literature, according to Arnold. Okay, he gave some direction to the people of the Victorian England at that time. So according to Arnold, culture was recommended as an answer to the present difficulties. उन्होंने बोला कि तुम्हारा कल्चर ही तुमको कुछ आंसर दे पाएगा। और कल्चर का इंटरप्रिटेशन कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली फ्रॉम लिटरेचर। ओके, सो द प्रॉब्लम हियर रिमेन दैट कल्चर वाज accessible only to few people। ठीक है, चलो रिलीजन अब थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होने लगा था, क्योंकि
church services से there was awareness created. Bible was recited. वो सब होता था. All right. So people religiously aware होना easy था than awareness about the culture. Why it was difficult? Because still most of the mass were uneducated. तो लिटरेचर पढ़ना उनके कैपेबिलिटी से अबव था. All right. So this was the problem when it was only at the hands of the privileged few. So according to Matthew Arnold, the highly instructed few and not the scantily instructed many. मतलब हाईली इंस्ट्रक्टेड थोड़े लोग थे, स्कैंटिली इंस्ट्रक्टेड जो थे माने थोड़े बहुत लर्नड पीपल कम थे, will will ever be the organ of the human race of knowledge and truth. So this is the fact कि educated and uneducated both of us will belong to the human race. और human race का first and foremost duty है on the awareness or on the knowledge of truth. They should know. So knowledge and truth in the full sense of the words are not attainable by great mass of human race at all. और ये नॉलेज और ट्रूथ पॉसिबल नहीं है कि हर कोई गेन कर पाए अभी भी. इफ यू सी टिल टुडे that knowledge and truth that comes from education is not for everybody. We are privileged people, we are lucky people that we can get education. Okay, and through education we could get the idea of knowledge and truth. ठीक है, लेकिन वी आर ओनली फ्यू टिल टुडे. अभी तक वो इज टॉकिंग अबाउट 19th century इंग्लैंड, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं. हाँ, लेकिन अभी तक 21st century तक वी हैव द सेम प्रॉब्लम. वी आर द प्रिविलेज्ड फ्यू हु आर सो हाईली educated that they can easily identify knowledge and truth. Okay, so he also says the same thing, that it is unfortunate that great mass of human race will be ignorant of this knowledge and truth which is imbibed in literature. Okay, so as best as possible we should take up books on literature. रिलीजन को भी बाद में कर सकते हो और साइंटिफिक थ्योरीज को भी बाद में कर सकते हो, बिकॉज इफ यू वांट टू रियली लर्न समथिंग देन यू कैन लर्न थ्रू योर कल्चर. तुम्हारा कल्चर क्या था. ओके, एंड वेयर विल यू फाइंड द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर. बाइबल में मिलेगा नहीं, डार्विन के थ्योरी में मिलेगा नहीं, लिटरेचर में मिलेगा. ओके, थ्रू द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइव्स इन लिटरेचर you can find your own culture according to Matthew Arnold. Are you understanding, learners? Yes, ma'am. Am I being very clear with you, or is it going above your head? Tell me. Okay, then I'll continue. Arnold, who had a great contribution in the formation of this canon. Okay, and how he formed this canon? By differentiating specific societies, specific section of a society, or he's saying that they have the capability to learn knowledge and truth. So those who have the capability to gain knowledge and truth, okay, they are a specific section of society. और ये स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी और उनका लिटरेचर पढ़ने का एबिलिटी को लेके ही देयर वाज अ सेटिंग ऑफ सर्टेन कैनन. सो दिस गेव द प्रिविलेज ग्रुप एक पोजीशन मिल गया उन लोग को. कौन किसको? एक प्रिविलेज ग्रुप जो था, जो हाईली एजुकेटेड मास था, जो लिटरेचर को पढ़ के एनालाइज करके इंटरप्रेट करके समझ सकता था, जो अच्छा लिख सकता था लिटरेचर में. दिस वाज अ प्रिविलेज ग्रुप. Okay, so they got this possession of culture. Okay, and they got this ability of transmitting education to the masses. ये लोग मास को पढ़ाने का एबिलिटी भी था उनके पास. So even if literature could provide answers to the problems of 19th century society, it can definitely
classify education as the important part only of a few people. ठीक है, तो आंसर था लिटरेचर में to the problems of 19th century society, but those answers could be understood only by a few group of people. So in this context, we will, address some questions that who are now going to be the highly instructed few. Okay, ये जो वो टाइम का ब्रिटेन में हाईली फ्यू लोग कौन होंगे? तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर. हाईली फ्यू वो लोग हैं जो एरिस्टोक्रेट है, जो अपर क्लास है, जो रिच है, जो इकोनॉमिकली हाई है, पावरफुल है, जो एजुकेशन को परचेज कर सकते हैं, एक ट्यूटर को खरीद के घर में ला के पढ़ सकते हैं. सो एजुकेशन सॉरी पावर रेस्टेड ओनली टू दोज फ्यू. ठीक है, what will happen to those poor people? Arnold doesn't give any answer to this question. He doesn't go to this question also seriously. So, what is certain here is that educated elite only had some excellent notions and excellent privileges. So, high classness determines and defines the parameter of the canon. Okay, because this canon formation was controlled by the privileged minority. Have you understood? कैनन किसने बनाया, किसने कहा हमारा लिटरेचर मेन स्ट्रीम है, बाकी सब साइड है, ऑल्टरनेटिव है? हु सेड? ओनली प्रिविलेज्ड फ्यू. मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन सिस्टम में दैट इवन ऑल द ब्रिटिश पीपल ऑल्सो डिड नॉट फॉर्म द कैनन. ठीक है, एक गरीब ब्रिटिश भी फॉर्म नहीं कर पाया कैनन. सबको इकट्ठा मिल के कलेक्टिवली भी किसी ने नहीं बनाया कैनन. कैनन वाज डिटरमाइंड डिफाइंड ओनली बाय द प्रिविलेज्ड फ्यू. एंड हु आर दिस फ्यू? दोज हु कुड अफोर्ड टू बाय एजुकेशन. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. If you say you have understood, only then I'll move ahead because now we'll come to the Indian domain. So ये था एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैनन्स. अभी हम लोग इंडियन डोमेन में आएंगे और देखेंगे हमारा कंडीशन क्या है. ठीक है, सो आई एम प्रोसीडिंग नाउ. सो और एक थ्योरी जो था, हम लोग तो मेनली एफ आर ल्यूइस और टी एस एलियट को ही बोलते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ कैनन्स. लेकिन एक 1921 में न्यू बोल्ट रिपोर्ट आया. न्यू बोल्ट एक वर्ड है, NEWBOLT. न्यू बोल्ट का रिपोर्ट है, 1921 में आया. ओके, और ये रिपोर्ट का नाम था टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड. ओके, सो हियर जो इंग्लिश एस्टेब्लिशमेंट था वो लोग एक रिपोर्ट रेडी करे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प. ठीक है, बहुत चालाकी से ये लोग एक रिपोर्ट रेडी किए एंड नेम्ड इट एज न्यू बोल्ट रिपोर्ट, जिसका नाम था द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड. सो दिस रिपोर्ट वो ज़्यादा ब्रॉडली इट गेव डेफिनेशंस टू द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स. कौन सा कोर्स? टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एक कोर्स हुआ, सॉरी इंग्लिश इन इंग्लैंड का एक कोर्स हुआ. इस कोर्स में वो लोग पूरा सर्टेन एग्जैक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए. ओके, और वो बहुत क्लियरली वो रिपोर्ट सेट आउट करता था हाउ टू डिटरमाइन कल्चरल लिटरेरी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलोनियल पॉपुलेशन, मतलब ब्रिटिश पॉपुलेशन. ओके, ब्रिटिश पॉपुलेशन कैसा कल्चर पड़ेगा थ्रू लिटरेरी रिक्वायरमेंट्स दैट वाज सेट अप. तो और भी इजी हो गया राइटर्स लोग के लिए इस बेसिस में लिखने के लिए, सो दैट देयर बुक्स विल बी रेड. So according to this report, it reads like this: to every child in this country there is one language with which he must necessarily be familiar, and by that alone he has the power of drawing directly from one of the great literatures of the world. So he says that this is only one language that you should master. ओके, ये रिपोर्ट में लिखा था, और ये ही लैंग्वेज तुमको पावर देगा
to read all the great literatures of the world. देखो कितना प्राइड है ये लोग में, कितना प्रेजुडिस है. बोलते इंग्लिश पढ़ने से तुम दुनिया का कोई भी ग्रेट लिटरेचर पढ़ लोगे. एंड दे आर करेक्ट ऑल्सो, क्योंकि नाउ आवर ग्रेट लिटरेचर्स आर ऑल्सो रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इजंट इट? तो ये जो रिपोर्ट था, न्यू बोल्ट रिपोर्ट, इट ऑपरेटेड इन टू लेवल्स. ओके, फर्स्ट लेवल था क्या इस रिपोर्ट का, दैट जब नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट बढ़ने लगा हर नेशन में, नेशनल सेंस ऑफ नेशनलिज्म बढ़ने लगा, कम्युनिटी फीलिंग आने लगा. ओके, तो कल्चरल डिमार्केशन होने लगा, कल्चरल डिवीजन होने लगा. नहीं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है. ओके, साड़ी पहनना हमारा कल्चर है, वो जीन्स और वो छोटे छोटे, दैट इज नॉट आवर कल्चर. तो वी स्टार्टेड हैविंग आवर बाउंड्रीज, वी सेट आवर बाउंड्रीज. ओके, तो इसका सीरियस इम्प्लीकेशन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ imperialistic strategies employed by इंग्लैंड. ब्रिटिश क्या करते थे, वो ट्राई करते थे, वो टाइम में थोड़ा सा फ्रेंच लैंग्वेज का भी स्कोप बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश लोग क्या किए, दे ट्राई टू सप्रेस द राइज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, बिकॉज फ्रेंच वाज आल्सो इन enjoyed by the privileged class people in 20th century इंग्लैंड particularly. ठीक है, 20th सेंचुरी इंग्लैंड में लोग फ्रेंच को भी बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये जो ब्रिटिश इम्पीरियलिस्टिक और पॉलिसी मेकर्स थे, दे ट्राई टू सप्रेस द राइज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, जैसे कि न्यू बोल्ट रिपोर्ट में आया, ज़्यादा करके इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोप इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. न्यू बोल्ट कंट्री लिखा कि इंग्लिश हैज़ टू बी फेवर्ड बाय अदर कंट्रीज एज वेल. Okay, those countries which Britain colonized. So, actually, this report asserted that English as a language will have a global significance, and English literature should be considered as the great literature of the world. Have you understood, or should I repeat? फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ा सा फेमस होने लगा था टुवर्ड्स 20th सेंचुरी. ओके, बट न्यू बोल्ट रिपोर्ट इट गेव अ स्प्लैश टू द होल राइजिंग फ्रेंच लर्निंग ट्रेंड. ओके, स्टॉप कर दिया, क्योंकि न्यू बोल्ट रिपोर्ट में निकला दैट नॉट ओनली पीपल ऑफ इंग्लैंड विल रीड इंग्लिश एक्सक्लूसिवली, बट people, all the colonized country people will also read English. Okay, and English literature henceforth will be considered as the great literature of the world. क्यों? क्योंकि ये सब हमारा कॉलोनीज है, इंडिया हमारा कॉलोनी है, हमारा पावर है. वी कैन फोर्स देम, वी कैन torture them to study English. So in that way, our language will become very significant worldwide. Secondly, our literature will have to be considered as great literature of the world. इस तरह से फोर्स किया गया, that was forcibly put on everybody. Okay, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एक ये कंपल्सन बन गया, at least in England and in all those countries where England had its rule. So कोर्स इन इंग्लिश चाहिए था, एक प्रॉपर कोर्स तो होना चाहिए ना. क्या पढ़ेंगे बच्चे अगर स्कूल में सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हाउ दे शुड स्टार्ट, स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे कि ग्रामर से कि लिटरेचर से? हाउ टू स्टार्ट? Ma'am, there is two levels in New World Report. One is nationalism or communism is called, but second level is Second one I told you na, that is the spread of English language, the compulsion spread of English language. Okay, how they how they instigated, how the report instigated a compulsory English for everyone, for Britain and also for the countries where it ruled. Okay, so proper course needed to be there. So Matthew Arnold, he tried to help this report have a proper course, and that is why he shaped up the canon. Okay, and by shaping this canon, he gave a special place to literature.
सो न्यू बोल्ट रिपोर्ट क्या क्या, इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल को हाई कर दिया। ओके, और न्यू बोल्ट रिपोर्ट को ऐड सप्लीमेंट करके जो मैथ्यू आर्नल्ड का कैनन फॉर्मेशन का जो आइडिया था वो और भी हायर और वैलिडिटी दे दिया इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोप को। अंडरस्टूड? तो ये जब रिपोर्ट बन गया, इट बिकेम वेरी मच वेरी मच क्या बोलते हैं, सिंबल that gave power to certain class of the people. So टीचर जो थे ये कोर्स के, they were regarded as missionaries. जो टीचर्स थे वो टाइम में, जब जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंडिया में भी आते थे, they were not considered as teachers, they were considered as missionaries, okay, according to the report, and they had a very significant role to perform in the society. So they will not only give education, but also they will spread the myth of Englishness, myth, ओके, वो लोग स्प्रेड करेंगे सबको कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर, ओके, इंग्लिशनेस जो है वो ही सबसे बड़ा चीज़ है और बाकी कुछ नहीं है। देखो कैसे आइडिया इवॉल्व हुआ। आगे बोला गया कि चलो लिटरेचर से हेल्प लो, तो ठीक है, चलो लिटरेचर से हेल्प लिया गया। अब लिटरेचर को कंपलसरी स्प्रेड करो हर जगह, ओके, और एड सम मीट टू इट, एड सम सो कॉल्ड बिलीव्स कि इंग्लिशनेस ही सबसे सुपीरियर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर ही बेस्ट लिटरेचर है इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट लिटरेचर है इन द वर्ल्ड, स्प्रेड दिस आइडिया। तो ये जो मिशनरीज थे ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गए, स्पेशली कोलोनाइज कंट्रीज में, और ये आइडिया को स्प्रेड करे। सो रीडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट यू नो जो कैनोनिकल इंग्लिश लिटरेचर था वो स्प्रेड किया गया इन डिफरेंट सोसाइटीज, और इसका पावर स्ट्रक्चर जो था इंग्लिशनेस का वो भी स्प्रेड किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस मिशनरीज। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट अलाउड द starting or the making of the canon. This was the another very important person here is F.R. Lewis, और एक है T.S. Eliot। तो ये जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी में, इन्होंने F.R. लिविस ने भी और T.S. एलियट ने भी, दे फॉर्म certain they formed certain theories, okay, with respect to this canon. लुइस ने भी बताया और टी.एस. एलियट ने भी बताया, and that is also validated not only by the British intellectuals but also it is read worldwide. जो tradition and individual talent, we people read it, we have only validated it. Okay, just hold on for 1 minute. Yeah. हाँ, एफ आर लुइस और टी एस एलियट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैनन्स. सो दिस आइडिया वाज सर्कुलेटेड बाय पीपल. कौन सा आइडिया? आइडिया ऑफ कैनन, आइडिया ऑफ इंग्लिश एज कंपल्सरी एंड ऑफ अ वेरी हाई रैंक. सो इट वाज स्प्रेड. Okay, this idea was circulated in different English universities or study center maybe, नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट आउटसाइड इंग्लैंड. तो यहाँ पर लुइस जो था, एफ आर लुइस, ही बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास. एफ आर लुइस कोई रिच एरिस्टोक्रेट क्लास का आदमी नहीं था. ही बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास. ओके, एफ आर लुइस and Eliot, T.S. Eliot was the part of aristocratic circle. अपर क्लास हाई क्लास था एलियट और लोअर मिडिल क्लास था एफ आर लुइस. ओके, so both of them they belong to different classes of the society. तो लुइस था वो ट्राई किया रीफॉर्मुलेट करने कैनन को, so that
मेंबर्स ऑफ हिज क्लास कुड ऑल्सो अकोमोडेट, जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे वो भी इस कैनन के अंदर में अकोमोडेट हो जाएंगे। उसके लिए लुइस ट्राइड, मतलब लुइस के क्लास के में भी जो एकेडमिक्स थे कि जो क्रिएटिव राइटर्स थे, they were considered out of the canon because they belong to lower middle class. So F.R. Lewis tried to theorize canon in such a way कि even lower middle class people could also accommodate themselves. Okay. uh, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए to help the lower middle class people, but his view remained very limited here. एक लिबरल ह्यूमनिस्ट ग्रुप था, एक जर्नल को चलाता था, लिबरल ह्यूमनिस्ट ग्रुप। द नेम ऑफ दैट जर्नल इज स्क्रूटिनी। ओके, सो हियर दिस स्क्रूटिनी जर्नल बेसिकली बिलीव करता था ऑन द गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल। ओके, नाउ दिस आइडिया it was very certain that people all over the world with good nature will accept. तो ये भी एक बहुत बड़ा कैनन में इंक्लूड हुआ, गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो स्क्रूटिनी जर्नल में आइडिया उनका होता था दैट यू शुड बिलीव इन द आइडिया ऑफ गुडनेस एंड गुड नेचर। सो ऐसे टाइप आइडिया बाद में कैनन में इंक्लूड हुआ सोसाइटी कल्चर में, but certain sub ideas were also included. So this faith in individual goodness is a basic characteristic feature of thinkers like F.R. Lewis. Okay, so the idea था scrutiny journal का, it appealed to the minds of people because it had liberal policy and it allowed for increase in the number of people to be a part of the literal group. तो स्क्रूटिनी के थ्रू से, स्क्रूटिनी का बहुत लिबरल आइडिया था और वो ज़्यादा गुडनेस को बिलीव करते थे एंड पीपल रियली अप्रिशिएटेड दिस। ओके, एंड थ्रू दिस आइडिया ऑफ गुडनेस दे वांटेड टू हैव अ बिगर पार्ट ऑफ दिस लिटरेट ग्रुप। ठीक है, सो ये जो थिंकिंग था ये सूट करता था क्लास एम्बिशन को। क्लास एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे सोसाइटी को, उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, नेचर ऑफ गुडनेस और गुड थॉट्स, दे लाइक दिस। एफ आर लुइस को भी बहुत अच्छा लगा ये थ्योरी। सो दैट इज़ वाई यू कैन सी दैट एफ आर लुइस का जो थिंकिंग था वो होल्ड करता था अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इवन टुडे। तो उनका थिंकिंग क्या था, उनका थिंकिंग भी मेनली ऐसे टाइप का लिबरल था। ओके, टू यू नो टू एक्नॉलेज व्हाट इज गुड इन नेचर, व्हाट इज गुडनेस। एक ह्यूमन नेचर में जो गुडनेस होता है, व्हेन वी एक्नॉलेज दैट, दैट बिकेम वेरी इम्प्रेसिव एट दैट टाइम। ठीक है, लिटरेट क्लास को अच्छा लगा और मेनली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो अभी तक चल रहा है, स्टूडेंट्स अप्रिशिएट एफ आर लुइस थिंकिंग। ओके, और ये जो गुड नेचर है, थिंकिंग गुड है, दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट in English literature writings as well. So it can be seen in the formation of one of the greatest canonical works by Lewis. F.R. Lewis ने एक टेक्स्ट लिखा था, ऐसे लिखा था, द ग्रेट ट्रेडिशन। ओके, रिमेंबर दिस, द ग्रेट ट्रेडिशन में एक कैनोनिकल वर्क है, जिसमें एफ आर लुइस आइडेंटिफाई करते हैं क्लियरली एक ग्रेट लिटरेचर को विथ ऑर्डिनरी फिक्शन। You have to understand this. F.R. Lewis लिखे थे the great tradition. In great tradition, he very clearly differentiates between great writing with marginal writing. Okay. ग्रेट लिटरेचर क्या है और दूसरा ऑर्डिनरी फिक्शन क्या है, उसको जानने का वेज एंड मेथड्स क्या है, उन्होंने कैनन सेट किया था फ्रॉम दिस राइटिंग कॉल्ड द ग्रेट ट्रेडिशन। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी लुइस कैनन जो था, वो चार्ल्स डिकेंस का जो राइटिंग था वो ज़्यादा उसको एम्फोसिस नहीं रहता था। जो कैनन था, जो बिलीव था लुइस का, ओके, लुइस का ग्रेट ट्रेडिशन का, जो ग्रेट लिटरेचर कौन सा है, ऑर्डिनरी लिटरेचर कौन सा है, तो ग्रेट लिटरेचर के अंडर में डिकेंस का राइटिंग आ नहीं पाता था। ओके, सो बहुत सारा लिटरेचर जैसे एमिली और चार्लोट ब्राउंटी का भी राइटिंग ये ग्रेट लिटरेचर के अंडर में नहीं आता था अकॉर्डिंग टू द कैनन सेट बाय लुइस, बिकॉज
जो एटीट्यूड था लुइस का, वो एक अपील था टू द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैनन. So there's another interesting thing about Lewis that Lewis का जो theory था, it was introduced in academics. Okay. And what Lewis is has written great tradition that comes under the literary criticism. So before him, the relationship remained largely undefined. So you can discuss the contribution of T.S. Eliot, okay, and see how T.S. Eliot's theory or literary criticism was different from Lewis. To Lewis ka remember only this much for now. Later you can have broader idea. उनका जो द ग्रेट ट्रेडिशन था उसपे उनका आइडिया क्लियर कट उन्होंने बता दिया था कि this value, if the novel has, or if the writing has, or if the literary piece has, then it is a great literature. If it doesn't qualify all these qualities, then it is not a great literature. तो डिकेंस का, एमिली और शार्लट ब्रॉन्टे का राइटिंग भी अकॉर्डिंग टू एफ आर लुइस ये ग्रेट ट्रेडिशन से बाहर था. इट कुड नॉट सेटिस्फाई द नॉर्म्स सेट आउट बाय एफ आर लुइस. हैव यू अंडरस्टूड अंटिल हियर? Turners, have you understood till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, now we will see what Eliot is saying. So, as I told you earlier, Eliot belonged to upper class, aristocrat class. Okay. और एलियट की तरह जो अपर क्लास लोग थे, they were continuously in search to prove themselves, to assert themselves, to show themselves off in society of their time. So, एलियट का जो क्लास एस्पिरेशन था वो क्लियर था उनके राइटिंग में, उनके क्रिटिसिज्म में. उनका जो एसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ओके, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मार्कर्स, ओके, इन that connects the association between literature and criticism. Ma'am, what Literature, is the name of his essay? tradition That is and individual talent. Tradition and individual talent. Okay. So tradition and individual talent में T.S. Eliot had clearly showed shown the association of literature and criticism. लिटरेचर और क्रिटिसिज्म एक दूसरे को कैसे टैंगल करते हैं, ब्लेंड करते हैं, दैट ही हैज शोन. मतलब जो लिटरेचर है that contains certain theories which is a part of literary criticism. That is what he had tried to show in tradition and individual talent. Acha. So, according to T.S. Eliot, in the context of literature that he created, okay, that created a space for T.S. Eliot, okay, to prove that criticism is the idea of tradition. एक सर्टन ट्रेडिशन से ही ओरिजिनेट करता है सर्टन क्रिटिसिज्म. सो अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, स्टडी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देखो खाली क्रिटिसिज्म नहीं, खाली लिटरेचर नहीं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वुड बी मीनिंगलेस विदाउट ब्रिंगिंग द वर्क्स ऑफ द पास्ट. ट्रेडिशन मतलब पास्ट. तो पुराना बुक्स को लाके अगर तुम नहीं पढ़ते हो, ओके, तो पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कोई मीनिंग ही नहीं होगा. सो ही सेज अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, ट्रेडिशन हैज गॉट सम, ओल्ड लिटरेचर हैव गॉट सम कनेक्शन with the kind of criticism we are making out of literature. So in a way the idea was very interesting, T.S. Eliot का, because it looked at the overall view of literature. वो लिटरेचर को पूरी तरीके से ग्रास्प करना चाहते थे. So there can be no doubt here that T.S. Eliot was able to try to accommodate those aristocrat people, those who felt powerless for some time. Okay, जो इम्पोर्टेंट फिगर थे लिटरेरी फील्ड में, लेकिन
ट्रेडिशनल थे, पुराने बुक्स थे, पुराने राइटिंग्स थे, दैट वाज ओवरलुक्ड. So T.S. Eliot tried to figure out those powerless aristocratic writers who were gone in the past. He wanted to revive them. So his idea actually was to make that tradition a little, uh, uh, bring little light to that tradition. कौन सा tradition? English tradition. Okay, old writings specifically. So the idea of including these new works, okay, उसका जो आइडिया था टी.एस. एलियट का कि ये पुराने बुक्स को, पुराने लिटरेचर को भी हम लोग फ्रंट में लाएंगे एंड वी विल ट्राई टू इन्वॉल्व सर्टेन क्रिटिसिज्म आउट ऑफ दिस. ये ज़्यादा लॉजिकल नहीं What लगा is लोगों को. the role of canon in this essay? In T.S. Eliot, it says the role of canon was to imply the traditional, to engage the traditional texts in the contemporary time. ओके, कंटेम्प्रेरी टाइम मतलब 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में हम लोग थोड़ा सा पुराना टेक्स्ट को लाके व्हेन वी विल ट्राई टू फाइंड सर्टेन सिमिलर एस्पेक्ट्स, those similar aspects will form the canons according to T.S. Eliot. Okay, so for him mainly remember that tradition was itself one type of canon. Tradition मतलब reading books, great literature from the past. Okay, तो टी.एस. एलियट का जो अर्ली पोएट्री था ना, नया नया जब वो पोएट्री लिखते थे, उसमें भी ही ट्राइड टू ही ट्राइड नॉट टू लोकेट दोस पोएट्री इन एनी सोसाइटी. लेकिन उनका जो अर्ली पोएम्स होता थोड़ा वेग होता था, थोड़ा अनडिफाइंड होता था, बिकॉज इट डिड नॉट सजेस्ट एनी सोसाइटी. इट वाज, क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता था विथ रिगार्ड टू द रीडिंग ऑफ द सोसाइटी इन हिज पोएम. ओके, so according to him, the whole world had become his point of view. जो वर्ल्ड व्यू है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. दैट इज वाई ही रोट हिज पोएम्स ऑल्सो इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे विच वॉज बियॉन्ड कॉमन कॉम्प्रिहेंशन. समझ में आया या शुड आई रिपीट? ही बिलीव्ड इन ट्रेडिशन. ओके, तो वो Yes. बोलते थे कि जो पुराना ट्रेडिशनल थे बुक्स है, लेट अस रिवाइव देम. ओके, सो ट्रेडिशनल टेक्स्ट से उनका मतलब था लेट अस हैव just writing without the indication of any space or time or society. So when he wrote that kind of poetry during his early career, that reflected his idea of tradition and individual talent. Okay, जो कोई स्पेस, कोई सोसाइटी को आइडेंटिफाई नहीं करता था. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड ये कौन सा सोसाइटी है, ये कौन सा टाइम है, वी कुडंट नो. उसको थोड़ा वेग रखते थे टी.एस. एलियट. But his later poetry was clear. It pointed towards the Anglican Christian thinking. Okay. उनका लेटर पोइट्री जो था ज्यादा करके एंग्लिकन क्रिश्चियन थिंकिंग को सजेस्ट करता था. हाँ, जिससे पता चलता था एंग्लिकन क्रिश्चियन थिंकिंग क्या था कि ऑल कॉम्प्लेक्सिटी कुड, ऑल काइंड ऑफ कंफ्यूजन कुड बी रिजॉल्व विथ सर्टन स्पेसिफिक रिलीजियस फ्रेम. सब कॉम्प्लेक्सिटी जो है तुम्हारे अंदर में, जो भी कंफ्यूजन है तुम्हारे अंदर में, वो सब सॉल्व हो सकता है अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर रिलीजियस फ्रेम रहा. तो प्रॉपर रिलीजियस आइडिया रहा, यू कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ये था उनका लेटर पोइट्री का इंडिकेशन. सो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सोसाइटी को डिपिक्ट नहीं करता था. दिस वाज फॉर एवरीबॉडी. इट वाज टुवर्ड्स द स्ट्रेट पाथ ऑफ फेथ. ओके, और एक कंफ्यूजन था, प्रॉब्लम था टी.एस. एलियट के थॉट में कि वो ना एक छोटा सा माइनॉरिटी क्लास को ही सजेस्ट करते थे सोसाइटी के, ओनली सिलेक्टेड फ्यू. ओके, और जो वो सिलेक्टेड फ्यू जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पैटर्न को समझ पाते थे, उनको उनका पोइट्री, उनका राइटिंग आइडिया समझ में आता था, बाकी किसी को नहीं आता था. ही wrote only for, or he indicated his writing only for the only few. Okay, और कौन से few? जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पैटर्न को स्टडी कर पाते थे. इट वॉज मेंट स्पेसिफिकली फॉर देम. दे अंडरस्टूड जो पैटर्न होता था ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, रेस्ट ऑफ द पीपल could not understand. So his writing was little sophisticated. Okay,
तो ऐसे देखो तो both of them had the contribution to the canon. Okay, so we can see that overall various social, literary, historical factors they contribute to the making of the canon. Okay, and that has been accepted by us as well, by the third world people. Please note this down. Please note it. Various social, comma, literary and historical factors, various social, literary and historical factors constructed the canon, constructed the canon, which is being accepted which is being accepted by the people studying and analyzing English literature, by the people studying and analyzing literature. Is that clear? Now, Yes, what ma'am. is okay? Good. Now, what is canon for us, for this third world people? ये canon का मतलब क्या है? हम लोग को क्या फायदा है इस टाइप से के कैनन को डिफाइन करके और इस टाइप के कैनन को फॉलो करके? ओके, सो एज स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, what is its implication for the people, for the students outside England? Okay, particularly हमारे थर्ड वर्ल्ड में. सो वी नो दैट ये एक मॉडल है, इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिस्टिक पावर का एक मॉडल है. ओके, कैनन इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायर्ड आइडियोलॉजी है that is forced upon the people, forced upon rather everybody. Okay, और इस कैनन से you can mainly see the superiority of the native people of English, okay, above others. So ऐसे है कि वो नेटिव से सुपीरियर है और बाकी कोई सुपीरियर नहीं है. So in that way you can see that English language here performs a double role. One hand, study of English language, it it perpetuates the myth. हमको encourage करता है ये myth में believe करने के लिए कि इंग्लिशनेस ही सब कुछ है, कि इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश थॉट, इंग्लिश लैंग्वेज ही सुपीरियर है. इस टाइप का जो myth है that is still being carried forth. Okay. अच्छा, दूसरा क्या है? on other hand it inspires the native people to behave like English. तो हमको भी वो इंस्पायर करता है टू बिहेव लाइक देम. वाई डज इट इंस्पायर अस टू बिहेव लाइक देम? बिकॉज ये मिथ जो है ना हमारे साइकोलॉजी में फिक्स कर दिया गया है कि वट एवर इंग्लिश इज सुपीरियर, वट एवर सुपीरियर इज इंग्लिश. ओके, so we are also, as Indian native people, to some extent we also get quite influenced by this kind of myth. और ये जो मैकॉले का जो व्यू था एजुकेशन का, वो तो और भी स्टैम्प लगा के लीगलाइज कर देता है टू ऑल दिस थॉट्स. ओके, मैकॉले क्या बोलते हैं? अ क्लास ऑफ पर्सन्स, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, but English in taste, in opinions, in morals and intellect. The languages of Western Europe civilized Russia. Okay, Western Europe civilized Russia. I cannot doubt that they will do for the Hindu what they have done for the Tatar. तो मैकॉले बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत बेनिफिटेड हुए हैं रशियन पीपल. ओके, तो आई नो दैट दिस हिंदू पीपल विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट बाय लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज ऑल्दो दे आर इंडियन, काले हैं कलर से, ओके, लेकिन इंग्लिश हो जाएंगे थॉट में.
उनके ओपिनियन में, उनके मॉरल में, इंटेलेक्ट में, तो ये सब मीथ है. ओके, these all are the myths of Englishness that Macaulay has also said it indirectly. Okay, he said that people are developing. Russia is developing learning English, so Hindu will also develop. They will become English in taste, English in their opinion, English is more in moral. हम लोग कितने sophisticated हैं, हम लोग कितने stylish हैं, so they will learn from us. So they spread the myth and we accepted those myths. अंधे लोग के जैसा we had accepted it. Okay. So जो मैकॉले का जो minutes था on education, it is it is a kind of क्या बोलते इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, एक फोर्सिबल इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं वो लोग इंडिया में. सो मैकॉले का जो मिनट्स है 1835, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्सिबल पॉलिसी अपॉन अस. और ये किसका पॉलिसी है? ब्रिटिश एम्पायर का पॉलिसी है. वो हमको थ्रू मिथ इंग्लिशनेस हमारे अंदर में भरना चाहे, एंड यू कैन सी दे हैव सक्सीडेड आल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट. ओके, सो हियर द एम वाज टू फोल्ड. हियर मैकॉले का वो चाहते थे जो पर्शियन को इंग्लिश से रिप्लेस कर देंगे एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. पहले पर्शियन हुआ करता था ऑफिशियल लैंग्वेज, दे वांटेड नाउ इंग्लिश टू बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया. ठीक है. और सेकंड क्या था? वो बोलना चाहते थे ये जो सोशल इविल होता है ना इंडिया में, इंडिया का सोसाइटी जो इतना इविल है, वो क्लीन हो पाएगा ओनली थ्रू इंग्लिश. देखो कितना बड़ा बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसा मीट है. ओके, दैट वाज फोर्स्ड अपॉन अस. फर्स्ट वो लोग चाहते थे पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज को रिप्लेस करने इंग्लिश से, दैट दे हैव डन आल्सो. सेकेंड वो क्या लोगों को बिलीव कराना चाहते थे, लोगों को बिलीव कराना चाहते थे कि जो हिंदू सोसाइटी हुआ करता था ना वो बहुत सोशली इविल हुआ करता था अकॉर्डिंग टू देम. ओके, तो ये जो इविल है सोसाइटी से उसको हटाने के लिए, जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं वाइट मैन्स बर्डन, वो लोग बोलते थे ये हमारा वाइट मैन्स बर्डन है कि ये जो अनसिविलाइज सोसाइटी है हिंदू सोसाइटी, एंड दैट वाज पर्टिकुलर अटैक ऑन हिंदू सोसाइटी एट द टाइम. उन्होंने एक अटैक था वो बोलते थे हिंदू सोसाइटी बहुत ज़्यादा बारबेरियन सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा अनकल्चर सोसाइटी है according to him, and that can be polished and refined through the learning of English language. So this is one of the ideas of evil ideas of Macaulay to influence their language upon us. Okay, are you getting all these things, learners? Yes, Is ma'am. it okay? ठीक है. तो see they had these evil plans. So इसको और ज़्यादा strong कर दिया गया. लॉर्ड बेंटिक, हाँ, लॉर्ड बेंटिक करके थे, बेंटिंक, BENTINCK. He had said this to another person called Alexander Duff in an interview. बेंटिक और भी वैलिडेट कर दिए मैकॉले का पॉलिसी को थ्रू हिज इंटरव्यू टू वन अलेक्जेंडर डफ. उन्होंने क्या कहा? If there was one opinion on which he was more decided than another, it was the expediency of teaching English in our higher seminaries, gradually substituting it throughout every department of government business. ठीक है? Instead of the Persian which ought as soon as possible to be abolished. तो ये भी मैकॉले के थ्योरी को, मैकॉले के मिनट्स को वैलिडेट कर दिए. ये बोले कि जितना जल्दी हो सके वी शुड रिप्लेस इंग्लिश बाय पर्शियन लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज. हटा दो पर्शियन को, इंग्लिश को लाओ. ओके. और इन्होंने कहा और बोला कि फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल वी शुड टीच इंग्लिश इन हायर क्लासेस. ओके, एज सून एज पॉसिबल इंग्लिश शुड बी कंपलसरी. इंग्लिशनेस आएगा, इंग्लिश इन्फ्लुएंस आएगा, तो ऑब्वियसली ऑफिशियल लैंग्वेज हट के इंग्लिश हो जाएगा. इन्फ्लुएंस ज़्यादा तो फिर it will be easy na to make it an official language, and it happened likewise. So you can see here the Association of English Language has an imperial agenda. उसका imperial agenda था. So here English language
functioned as a major part of connection between English and Indian community. तो ये लैंग्वेज था ना, ये लैंग्वेज फॉर्म्ड अ कनेक्शन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन कम्युनिटी, कम्युनिटी को कनेक्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज. सो जब लोगों इंडियंस भी जब इंग्लिश पढ़ना शुरू किए ना, तो दे फेल्ट देमसेल्फ लिटरेट. सिर्फ इंग्लिश पढ़ के अपने आप को पढ़ा लिखा समझते थे उस वक्त के इंडियंस. ओके, तो इस तरह से एक बाबू कल्चर आ गया. हमको इंग्लिश पता है तो हम एजुकेटेड हैं, हम एजुकेटेड हैं तो हमारा कल्चर क्या है, बाबू कल्चर. कॉल मी बाबू. ओके, राम बाबू, श्याम बाबू, सब बाबू हुआ करते थे. हाई क्लास पीपल जो अपने आप को इंग्लिश पढ़ के लिटरेट समझते थे. ओके, सो ऑल्सो एट द सेम टाइम यू कैन सी दैट द लैंग्वेज मेंटेन्ड अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स. एक थे प्रिविलेज्ड इंग्लिश ग्रुप और एक थे नेटिव्स. जो इंग्लिश ग्रुप्स थे वो अपने आप को बहुत शो ऑफ करते थे, सोफिस्टिकेटेड समझते थे, एंड दे लुक डाउन अपॉन नेटिव्स. Similarly, natives also received this message in the same way. They thought themselves inferior over this Babu class people, so-called Babu class people. Just hold on, learners, for a minute. Okay, now let me continue with this. तो जो ब्रिटिश करना चाहते थे, जो पॉलिटिक्स करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज, दे सक्सीडेड इन इट. ओके, बाय क्रिएटिंग अ barrier between the different classes of society in India. So the language of the native people was little simple. Okay, लेकिन जो सिंपल लैंग्वेज को सोचा जाता था, इट वाज अ डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज. ओके, अगर हम हिंदी बोलते हैं तो नहीं, इट शोज दैट आई एम अ पुअर पर्सन. ओके, तो ऐसे ही करके जो लोअर क्लास का जो लैंग्वेज था वो आस्ते आस्ते एबॉलिश कर दिया गया. ओके, एंड दे थॉट दैट नहीं, रिफाइंड इंग्लिश बोलने से ही क्लास आइडेंटिफाई हो पाएगा. सो समहाउ और द अदर देयर वाज अ नीड दैट वाज फेल्ट to remove native languages. Okay, so clearly native languages were suppressed by spreading canonical interpretation among the Indian masses. Canonical interpretation क्या था? Canonical interpretation था कि English language is superior above everybody, everything, because English language teaches great culture, great sophistication, great society. It spread all this myth, and that myth was easily absorbed by very simple Indian folks. तो नेटिव लैंग्वेज, नेटिविटी जो था वो सप्रेस होने गया ये मीथ के अंडर में, इंग्लिशनेस के मीथ के अंडर में. और इंडियन लोग भी सोचने लगे कि हाँ, हमारा जो इंग्लिशनेस हो जाएगा, मीन्स इंग्लिश लाइफस्टाइल हो जाएगा, तो हम लोग भी रिफाइंड लोग हो जाएंगे. सो इन टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, दिस आइडिया जो था एलीट का आइडिया, इट हेल्ड सम काइंड ऑफ मास्टरी ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज. जो मास्टर है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलेगा. सो इंग्लिश लैंग्वेज वाज प्रूव टू बी द privileged language above all other languages. So simultaneously Persian language was easily removed by English language. Okay, so how cleverly they played upon the simple minds of the Indians. So the introduction of English language in Indian education system, it completely influenced the academic and social structures of India. So Indian society भी पूरा रिफॉर्म आ गया, चेंज आ गया. ओके, और ये जो लैंग्वेज है ना, ये तो इनफिल्ट्रेट किया गया, घुसाया गया.
Okay, forcibly that was pushed for us. Okay, it was pushed into our administrative system. It was pushed into our social system. Okay, क्योंकि जिसको इंग्लिश आता था, they were the English elite people. Elite people, they were considered as elite. They were considered as educated groups. जहाँ लर्निंग होता था वहाँ पर ज़्यादा सोफिस्टिकेशन दिखाते थे वो लोग जो लोग इंग्लिश में लर्निंग हासिल कर चुके थे. So the universities of first world controlled, okay, the universities of the third world in the Ma'am, context of imperialistic domination. Yes, tell me. You're saying something? Is there anyone saying something? Okay. So I'm not audible, ma'am. I'm not audible. Chinmay, I'm not audible. Tell me. I think there's some problem with your connectivity, Chinmay. I don't think there's any problem here on my side. There's some problem there with you. Tell me if you can hear me. Chinmay, can you hear? Okay, rest of you, can you hear me? Sangamitra, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, then there's some problem with Chinmay's connectivity. Okay, let me continue. So, learners, you can see that in this way, those English universities, they controlled our third world universities through language. Okay. So, even if we are trying to refer to the larger context of third world, we try to give examples, okay, from our texts. We try to um, talk about Indian society. Whatever you see, at that time you see a high rise in the Englishness that they tried to force upon us. So we are. I don't mean here that I'm not suggesting that the third world, um, you know, um, is the whole third world means only India. No, it comprises of Africa and Latin America also. So similar things happen in those countries as well. सिर्फ इंडिया ही सेंटर नहीं था इस तरह के separation का. Africa, Latin America, they also have these kinds of situations. So the idea that I want to put before you is the idea of the is a problematic idea. Okay, because this idea also led to the resistance in other areas. रेजिस्टेंस मतलब प्रोटेस्ट हुआ, जैसे मैं बोल रही थी गांधी ने प्रोटेस्ट किया, अरे भाई हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे. Okay, we have our own culture. And you are saying we are barbarians, we are not civilized, and it is the white man's burden to civilize us. This is all wrong, this is all vague. Okay, तो गांधी ने लोगों को सेंसिटाइज किया इन ऑर्डर टू रेजिस्ट. ओके, कि तुम खुद को सिर्फ इंग्लिश बोल के बाबू मत समझो. यू आर नॉट, यू कैन नॉट बिकम बाबू. दे विल स्टिल लुक डाउन ऑन यू. You can become superior only when you respect your culture. Okay, so so this kind of forcible Englishness also created resistance. So end of 19th century, you see that there was a material struggle related to the importance of education in different foreign universities also. Oxford में, Cambridge में, they had struggle. Okay, and that that disturbed their idea of the importance of education. Struggle क्यों हुआ? Because India resisted. इंडिया अफ्रीका वो लोग भी रेजिस्टेंस किया, बट इंडिया वाज इनिशियली वेरी रेजिस्टेंट टू ऑल दीज आइडियाज. ओके, सो इंग्लिश एजुकेशन का कोलोनाइज कंट्री में स्पेसिफिक पर्पस था. दे हैड सम पर्पस इन द माइंड एंड टू कंट्रोल ऑल ऑफ अस. ओके, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. लेकिन ये जो इंग्लैंड जो प्रोग्राम था एजुकेशन का इंग्लैंड का, ये हमको कैसे अफेक्ट किया, हाउ वी वर अफेक्टेड.
सो अथॉरिटी जो थे वो फ्रेम करे थे इंग्लिश कोर्स, एज आई वाज सेइंग इंग्लिश कोर्स को फ्रेम करे थे इन आवर यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज, एज आई सेड 3 यूनिवर्सिटीज ओपन और कोर्स फ्रेम होने लगा. अथॉरिटी स्टार्टेड फ्रेमिंग द कोर्स, सिलेबस रेडी करने लगे. ओके, दे ऑल्सो फेल्ट प्रेशर फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका. इंग्लैंड और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से उनको भी प्रेशर फेस करना पड़ा. क्यों? बिकॉज इवन बिफोर they were making an outline of the English courses. Okay, uh, वो लोग रेडी कर रहे थे. हमारा जो लैंग्वेज स्किल था, राइटिंग स्किल था, अंडरस्टैंडिंग था लिटरेचर का, उसको भी तो क्या बोलते हैं, उसको भी तो कोलैबोरेट करना चाहिए ना. मतलब हाउ वी विल अंडरस्टैंड देयर लिटरेचर अनलेस वी हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट लिटरेचर. लिटरेचर क्या है जानने के बाद तो हम लोग लिटरेचर पढ़ पाएंगे ना. सो दैट गेव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू सेट अप स्पेसिफिक कोर्सेस इन इंडिया. ओके, सो एक स्पेसिफिक आइडिया है इंग्लिश का दैट इज जनरेटेड बाय दीज यूनिवर्सिटीज, और वो लोग सेट करेंगे इंग्लैंड में बैठ के, यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के हमारे लिए कोर्सेस, एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम विदाउट क्वेश्चन. तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करा. सो इट डज नॉट कम एज अ सरप्राइज दैट स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर, they considered themselves closer to English setup. Okay, and they thought themselves more literate. So the course in English, it has to be adapted and rewritten. It has to be taken some aspects of literature in one's own context. तो उनका पर्पस फुलफिल हो गया. वहाँ बैठ के उन्होंने हमारे लिए कोर्स किया. वी रेड दैट कोर्स, वी अंडरस्टूड इट. हमको रूल्स रेगुलेशन सेटअप दे दिया गया. वी रेड एंड वी फेल्ट मोर कनेक्टेड टू देम rather than connecting ourselves to the local Indians. Okay, so here it is very interesting to know that रेजिस्टेंस होने लगा यूनिवर्सिटी के बाहर. ये 3 यूनिवर्सिटी के बाहर रेजिस्टेंस होने लगा. हाँ, और हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर थे, दे ऑल्सो रेजिस्टेड. स्टूडेंट्स तो कनेक्ट करते थे, लेकिन जो प्रोफेसर्स थे, जिन लोग को बाउंड किया जाता था इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, जिन लोग को इंग्लिश भी पता था, हिंदी भी पता था, उर्दू भी पता था, दे वे मल्टीलिंगुअल. हाँ, एंड दे कुड राइट एंड ट्रांसलेट इन मेनी लैंग्वेजेस. वहाँ से भी रेजिस्टेंस आया. सो वी कैन सी द कनेक्शन हियर बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनन इन द फर्स्ट वर्ल्ड एंड इन इम्पैक्ट ऑन द थर्ड वर्ल्ड. थर्ड वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्या था? मिक्स था. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कुछ कुछ थे जो खुद को बहुत ज़्यादा इंग्लिश मानने लगे थे. मतलब वो जो इंग्लिशनेस का मिथ था, दैट वाज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट. वेयर एज जो प्रोफेसर थे या जो भी लिटरल क्लास थे, जो लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते थे, उर्दू पढ़ सकते थे, संस्कृत पढ़ सकते थे, वो लोग रेजिस्ट करें. दे सेड दैट व्हाई आर वी फोर्स्ड योर लैंग्वेज. ओके, सो दे वर द पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस. सो कैनन जो सेटअप हुआ था, यहाँ पर आके वो कैनन का थोड़ा ट्रबलसम सिचुएशन हो गया बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, तो कैनन का एक फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस होना चाहिए, एंड दिस इज द नीड व्हाई वी नीड टू फॉर्मुलेट रेजिस्टेंस टू द कैनन. तो हमारे लिए हम लोगों ने रेजिस्ट किया कि वो कैनन को हाउ वी कैन कनेक्ट. वी हैव डिफरेंट कल्चर. ओके, वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, वी हैव डिफरेंट थॉट्स. तुम्हारा इंग्लिश ट्रेडिशन पढ़ के वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट. दिस वाज द रेजिस्टेंस बाय पीपल हु हैव रेड मल्टीपल लैंग्वेजेस. दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग इट, और इन लोगों के वजह से रेजिस्टेंस को भी कैनन में लाना पड़ा. Okay, so here we come to the next point where we see the presence of certain biases. Okay, behind canons. तो ये जो biases हो गया था कि जो भी ब्रिटिश लोगों ने कहा वही ठीक है. Okay, that bias, that was a bias that was resisted by our people. तो हम लोगों ने इंडियन इंग्लिश राइटिंग का, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का फिर से कैनन को रीडिफाइन किया. वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर कैनन्स. Okay, so we started creating our own canons because our society is different, our culture is different. We cannot pretend. So, कोई कोई pretend कर सकते हैं इंग्लिश बाबू के जैसे, but common people cannot pretend themselves as babu class people. So they resisted and they said no, we have to create our own body, we have to create our own
कैनोनिकल थ्योरीज। तो थर्ड वर्ल्ड में जब ये कैनन आया, इट टुक डिफरेंट फॉर्म्स, इट टुक डिफरेंट शेप्स, इट टुक डिफरेंट इडियोलॉजीज। ओके, तो एक थियोरेटिकल राइटिंग आया टू रेजिस्ट दिस काइंड ऑफ कैनन। ओके, और क्रिटिसिज्म जो था, क्रिटिसिज्म इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी एक एलाइड ब्रांच है लिटरेचर का। और ये बहुत इंटीग्रेटेड है लिटरेचर से। यू कैन नॉट टेक आउट क्रिटिसिज्म फ्रॉम लिटरेचर, लिटरेचर से ही अटैच्ड है। सो हियर वी आर गोइंग टू, वी विल सी इन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव the claim to understand the different works of literature. So जो critical theory है वो हमको literature को जानने में, समझने में, interpret करने में help करता है, these theories. Okay, so in you can see that literature है एक body of thought that can be easily decoded by criticism. Criticism में कितना सारा idea है, कितना सारा theory है, अगर तुम लिटरेचर पढ़ते हो उसको अच्छे से समझ पाओगे इफ यू हैव सम आइडिया ऑफ द क्रिटिसिजम्स। ओके, सो हियर वी सी तो इंडिया में आके हमारा जो क्रिटिसिज्म है, हमारा क्रिटिसिज्म क्या है? पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है, न्यू कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है। सो these are the specific criticisms. Okay, न्यू कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, ये पर्टिकुलरली दो बड़ा बड़ा कैनन्स है। ठीक है, जिससे हमको लिटरेचर पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकता है। Okay, our understanding of the text can become better because we can decode those content ideas through these canons. Canons of post-colonial theories, canon of neo-colonial theories. Okay, so when you read certain texts, तुम पढ़ोगे कि एक इंडियन colonized लोग को कैसे सप्रेस किया जाता है, how he is getting psychological tormented. So if you यूज दोज पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म को लाओगे तो वो उस क्रिटिसिज्म में दे हैव प्रॉपरली डिफाइंड। ओके, जैसे कि रंजीत गुहा, गायत्री स्पिवक, they have made certain, they have created certain canons for us. Okay, that we are also called subalterns. Subalterns mean the subjugated groups. Ma'am, new Okay, colonial theory, that means which हाँ, time period? after independence, after independence is the new colonial theory. Okay, Post when colonial we to after independence. same after independence only, when we started to form Means new post colonial ideas. criticism and new colonial criticism are same. Yes, somewhat same. तो ये जो पोस्ट colonial criticism is the largest canon of थर्ड वर्ल्ड क्रिटिसिज्म। ठीक है, ऐसे थर्ड वर्ल्ड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये सब ही जनरल पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म के अंडर में आता है। ओके, सो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म मीन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर ग्रीफ, योर सॉरो अबाउट हाउ यू वर नेग्लेक्टेड, हाउ यू वर लुक डाउन अपॉन। सपोज फेमिनिस्ट थ्योरी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये भी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंडर में आएगा, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म इज टीचिंग अस, is trying to indicate all kind of suppression or tortures, torments about upon the general mass. तो पोस्ट कॉलोनियल जो क्रिटिसिज्म है, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑफ सप्रेशन, टॉर्चर, कि वो बताते हैं कि कैसे कॉलोनियल टाइम में वी इंडियंस वर टॉर्चर्ड, हाउ वी वे बैडली ट्रीटेड। ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, और उसका आफ्टर इफेक्ट भी है, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी में है कुछ अभी तक जो कॉलोनियल लेफ्ट ओवर भी है। ओके, एंड दैट इज इन्फ्लुएंसिंग आवर प्रेजेंट लाइफ्स, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। Am I being clear with you? Yes, Laddu? ma'am. Okay, so Yes, ma'am. yes, this is how I told you how we started with this cannons. ठीक है, जो तोप और तोप के गोले को बोलते हैं कैनन्स, बट यहाँ पर होता है कि मेन आइडियाज एंड बिलीव्स, जिसको फॉलो करोगे तुम
So you can get into the understanding of the text better. तुम्हारा अगर क्रिटिकल आइडिया ज़्यादा है, अच्छा है, तो यू इन अ वेरी नाइस, इन अ प्लेन क्लियर वे यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट. ठीक है. तो इस स्टार्ट हुआ था वेस्टर्न कैनन से. वेस्टर्न कैनन के लिए स्लोली स्लोली हम लोगों ने रेजिस्ट किया. इंडिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट colonized countries that resisted against this kind of imposed forced cannons. We talked about our own cannons. Okay, so we had the reformation of our own cannons. ठीक है. और ये कैनन सब प्रेजेंट है क्रिटिकल टेक्स्ट में. Okay, am I being clear? Yes, ma'am. Okay, then should I end my class here? Any doubt? Anything you want to ask? No, ma'am. Thank you. Okay, then learners, you may leave for today. Tomorrow we'll continue with the seventh block. You may leave today. Yes, We'll ma'am. meet tomorrow. Thank you, ma'am. Okay. Thank you.